Recording in progress. Okay, good morning all. As we have discussed in the last lecture about linear filtering using DFT. So there we have discussed about how linear convolution is performed using a circular convolution operation. So that again, and we have discussed how the circular convolution is performed with the help of zero padding to get the result of linear convolution. So that's what we have discussed in the last class. And today we are going to discuss on the topic filtering of long data sequence. There are two different methods. One is overlap save method and another one is overlap add method. So let us discuss one by one. So as we all know that transferring or filtering a long data sequence is difficult through a DSP. So that's why we are converting them into smaller blocks and processing the smaller blocks, and we are getting the result to be added or result to be saved with the help of these two different methods. That's what we are calling it as overlap save method and the overlap add method. Let us see one by one. Hope everyone is here with me. My voice is clear to all. Yes or no? Whether my voice is audible properly? Hello? Yes. Okay, so let us, you please note down for today's topic. The title is filtering of long data sequence. In that two methods are there. One is overlap save method and another one is overlap add method. Let us discuss one by one. So what exactly we are doing in overlap save method is, as we know that to process a signal with the DSP, we are using DFT. So that is, DFT is used to implement linear filtering. A signal is processed in blocks, right? We cannot process a signal with a longer sequence, so we need to process that into the blocks due to the real-time requirement like a low delay, low memory, and the size of the block cannot be a large. So these things we need to understand, right? Then the second point what we are doing is the length of the FR filter is M and the length of the block data is L. So that means the filter which we are using, its length is M and the length of the block which we are forming is of L, and always the length of the block should be greater than the length of the filter. Okay, and then each time a block of data of length L plus M minus 1 is filtered by using the DFT method. So that means, so we are processing the data with the help of this length L plus M minus 1 using the DFT method again. So here with this diagram we can understand clearly. So if I have a length of this way, if I have a length of the signal is this one, like long sequence we are having. So it is like and that long sequence I'm just dividing it into different blocks. That's why I'm calling it as length of, this is first length block, this is second length block, and the third length block. So that the how we are forming the blocks are. So here while forming the blocks, we have to take care that in this overlap save method. So first M minus 1 zeros we are just adding, right? Here like M minus 1 zeros we are adding, and we are taking the length L samples of the length we are taking here, like L new samples we are taking. Then again, next while we are having the while we are saving the values, then again we are we are forming the second block as again the M minus 1 zeros. यहाँ पे ले रहे हम, these values are going to be taken at this point. Then again we are adding the L new samples here, and then again here in this block we are adding the M minus 1 samples at this point, and we are just taking the L new samples. So likewise, this complete long sequence we are dividing it into the smaller blocks. So that is
this is what we are calling it as a block formation. Block formation we are just calling, right? Block formation we are just forming this way, and then while performing an output, and then we are just performing a DFT on this block. We are performing a DFT on this block to get the answer, and then after getting the DFT answers, that is DFT, it's like a circular convolution we are performing here. So this is the block we are calling, like let us like it as x1 of gen, x2 of gen, and x3 of gen. We got here like example as 3 blocks, and we have to circularly convoluted this with h of n. That is the second sequence which we are having. So to find the value of y1 of 1, this is, let us call it as y1 of 1, and this is call it as y2 of gen, and this is call it as y3 of gen, right? So this is the way how we are performing the circular convolution on these block values. So again, after getting this y1 of 1, y2 of n, and y3 of n, we are discarding the m minus 1 samples, because here we have added the extra values. That means if you are not discarding these values, so it will not satisfy the length of the sequence, like l minus m, n plus m minus 1. जो output हमें expected है, तो वो output नहीं मिलेगा if we are not discarding these values. So for that purpose, we are discarding the m minus 1 samples what we have added in this part, right? So from each output, we are just discarding the m minus 1 samples. So this is about overlap save method. Hope you understood. If not, please just note down this. I will take out the example. With that, you can understand very easily. Just take this diagram. Just take this diagram so that we will go for the example. Recording progress. Let me repeat the question. Find the output y of n of a filter whose impulse response is h of n equals to 1, 1, 1, and the input signal is x of n equals to 3, minus 1, 0, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 1 using overlap save method. Hope everyone has noted this question. Now, so before going to start with our actual overlap save method, so first we will understand, or first we will as a verification purpose, we will understand first what the answer we are going to expect for the final result. So आप ये सब लोग just calculate the answer using linear convolution method, Stabler method. Just calculate and tell me the answer. Hope everyone will do that. This is 2, 0, 1, 2, 1. 1, 1, 1. This is again 3, minus 1, 0, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 1. 3, minus 1, 0, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 1. 3, minus 1, 0, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 1. Please just get the answer. Hope everyone knows about this tabular method. तो ये आसान मेथड मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि you can get the answer with this if it is your MCQ question is there, right? तो अभी आपको आंसर क्या एक्सपेक्टेड है, बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड. तो क्या आंसर आया? y of n is equals to, what is the answer? Anybody has got the answer?
यस सर। चलो बताओ आंसर अभी। 322 इट इज 322 046 046 533 4 533 4 431. 1. Okay, how many of you have got this answer? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here what will be the total length of the sequence? चलो अभी इसका लेंथ कितना हम कैलकुलेट करते हैं. So let us assume that this is ns बोल के बोलेंगे हम इसको. ns मतलब यहाँ पे length for the total result what we have got, like with the SEO method, or let us assume that it is ns is the total length of the sequence. तो यहाँ पे l plus m minus 1. अभी l plus m minus 1 क्या? l is length of the first sequence and m is length of the second sequence and minus 1. तो यहाँ पे कितना है, कितने सैंपल्स प्रेजेंट है? x ऑफ n के सैंपल्स कितने हैं? 10 प्लस 10 m कितने प्रेजेंट है? 3 3 माइनस 1, तो कितना आया? 12. तो आउटपुट सैंपल में 12 सैंपल प्रेजेंट है क्या? आपने चेक करो एक बार. तो इसका कितना लेंथ है? Yes, sir. इट्स लेंथ इज 12. बराबर. ये आपने वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताया. तो अभी हमें ये आंसर निकालना है विद द हेल्प ऑफ ओवरलैप सेव मेथड. क्लियर? यहाँ पे किसी कोई डाउट है? एनीबॉडी हैज डाउट हियर? नो सर। Now let's move further. Now let us move with the overlap save method. तो ये सब चीजें मैं हटा रहा हूं अभी यहाँ से. Okay, so now let's move with the overlap save method. Now, तो दिया हुआ सीक्वेंस ये है अपना. This is what our sequence x of n. तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? We will assume the length of the block. तो यहाँ पे L हम अज्यूम करेंगे. दिस इज आवर लेंथ ऑफ ब्लॉक. तो यहाँ पे आप ये अज्यूम कर सकते, और इन क्वेश्चन दे विल असाइन यू द लेंथ ऑफ द ब्लॉक शुड बी 5, लेंथ ऑफ द ब्लॉक शुड बी 7, लेंथ ऑफ द ब्लॉक शुड बी 9, like that they will ask you to perform that way, right? So this L we are assuming here length of block, let us assume that it is 5. ठीक है. तो here the block which we are forming, let's call x1 of n. जैसे कि अभी मैंने, ये मेरा बड़ा ब्लॉक है, right? So this is what the block which I am having is, let us write here x of n. I am having it as x of n equals to, और एक बार लिख लो ये क्वेश्चन. So it is 3 minus 1 0 1 3 2 0 1 2 1. This is my block. Okay, तो अभी मुझे इसको स्मॉलर लेंथ में डिवाइड करना है. दिस इज माय लॉन्ग सीक्वेंस, so I wanted to convert this into the smaller lengths. So let's write here x1 of n. Let us write x1 of n is the smaller length. So first what I need to add, डायग्राम में आप देखेंगे तो क्या है वहां पे? पहला m-1 जीरोस हम ऐड कर रहे हैं उसको, राइट? दिख रहा है डायग्राम में सबको? जो ब्लॉक हम फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे व्हाट वी आर एडिंग इज वी आर जस्ट एडिंग m-1 जीरोस. यस सर नो? यस सर। तो m-1 जीरोस मतलब क्या है? यहाँ पे m क्या है? लेंथ ऑफ आवर सेकेंड सीक्वेंस, मतलब कितना है? 3 है, राइट? -1 is equals to 2 zeros we need to add first. यहाँ पे this is 0 and 0. आया समझ में? How I am writing these 2 zeros here? सर रिपीट करो सर एकदम। हाँ, m-1 zeros हमें ऐड करना है ये ब्लॉक में, राइट? तो m क्या है अभी अपना? दिस इज अवर लेंथ ऑफ सेकेंड सीक्वेंस, लेंथ ऑफ सेकेंड सीक्वेंस. ओके, तो द वैल्यू ऑफ m इज हियर. इफ यू मेजर द वैल्यू 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिया मैंने, राइट? -1, ये -1 लिख रहा हूँ, तो 2. तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस में 2 zeros ऐड करना है. Why 2 zeros?
the length of the m is 3. It's not mandatory that completely 2 0. ये m के वैल्यू पे डिपेंड है. यहाँ पे m अगर आपका 4 हुआ तो कितना जीरो ऐड करना पड़ेगा? 3. m माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 जीरो. अगर आपका m 2 हुआ तो 2 माइनस 1 राइट 1 0. मतलब the value of zeros which we are adding to this block will depend upon the length of the m. Clear? Is this clear? Still any problem? No, Yes, sir. sir. Clear. हाँ, तो अभी मुझे ये लेंथ का, इसका जो लेंथ है ये ब्लॉक का, तो मुझे टोटल लेंथ 5 चाहिए. तो मैं ये 3 सैंपल ले लेता हूँ. राइट, यहाँ पे आई विल ऐड 3 माइनस 1 0. हो गया मेरा टोटल लेंथ. लेंथ कितना हुआ अभी? 5 हो गया यहाँ पे. Getting my point? So these L samples I have taken. L samples I have taken from the given sequence. ठीक है, अपना ये डायग्राम ऐसा था ना, वहां पे पहला ब्लॉक जो था ये m-1 0 ऐसा था बराबर. m-1 0 यहाँ पे लिखे थे और यहाँ पे L लिखा है. राइट, तो ये मैंने इक्वेशन रेडी किया है अभी. क्लियर? आया समझ में? हाँ सर. हाँ, तो अभी जो दूसरा सीक्वेंस हम लिख रहे हैं x2 ऑफ n. सो व्हाट आई नीड टू टेक, इसके जो लास्ट m-1 वैल्यूज है, this is equals to this last m-1 values I should take it as a first m-1 values of second sequence. तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, last m-1 values of the first sequence are taken as the first m-1 values of the second sequence. Getting my point? तो ये दोनों पॉइंट इधर लिया मैंने अभी. राइट, तो नेक्स्ट एल सैंपल. हाँ, कोणत्या ऑर्डरने घ्यायचं? 0-1 किंवा किती सिक्वेन्स घ्यायचं त्यातलं? नाही, 2 व्हॅल्यूज घ्यायच्यात आपला. आम्ही 2 0 ऍड केलं इथं बरोबर. हा सर. हा इथले 2 सॅम्पल जे आहेत, लास्टला 2 जे सॅम्पल असतात ते इथं फर्स्टला घ्यायचा. हाय असं 1 मायनस 0-1 घेतलं चालत नाही. नाही नाही चालत ना. जसं आहे तसंच घ्यायचं आपल्याला. सिक्वेन्स जसा आहे तसंच, सिक्वेन्स चेंज करता येत ना आपला. ठीक आहे, मग आता नंतर मी काय करतो, आणि हे एल सॅम्पल्स इथले घेतो. 1 3 2 1 3 2. आलं का लक्षात? आम्ही असं लिहिलं होतं तिथं, हा लिहिलं होतं ना असं. असा ब्लॉक आहे आपला. राईट, मी काय केलं तिथं खालच्या इक्वेशनला हा जो व्हॅल्यू आहे हा असं इथं घेतला मी, आणि नंतर एल ऍड केला. बरोबर, कळालं का मला? हा पॉइंट इथं घेतला मी ॲज इट इज. येस सर नो? येस सर, येस सर. कळालं का? मग हा, तिथं सर. आणि एल सॅम्पल्स आणि ऍड केलं मी. आता आता तुम्ही सांगा मला तिसरा इक्वेशन, तिसरा ब्लॉक. यू जस्ट टेल मी नो. x3 ऑफ n इज इक्वल्स टू कसं लिहायचं? 3 2 3 2 येस 1 1 2 1 2 1. नो 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 0 1 2 3 2 0 1 2 0 1 1 2. 2. 2. व्हेरी गुड. कळालं ब्लॉक कसं फॉर्म करायचं? हा सर. अजून काय कन्फ्युजन आहे का इथं? स्टिल एनी प्रॉब्लेम आर एनी कन्फ्युजन हियर? लेट अस फॉर्म वन मोर ब्लॉक. x4 ऑफ n. x4 ऑफ n कसा लिहिता येतं तुम्ही? x4 ऑफ n कैसा लिख सकते हैं? Tell me what is an x block? सर 1 2 1 1 2 1 डबल 0. हाँ, अभी हमें लेंथ ऑफ द सीक्वेंस हमें यहाँ पे 5 करना है, तो यहाँ पे यू कैन ऐड 2 zeros एक्स्ट्रा. राइट, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ब्लॉक. सपोज मुझे x5 ऑफ n ब्लॉक बनाना है समझो अभी. राइट, यहाँ पे अगर आपका और एक वैल्यू है और यहाँ पे आपके वैल्यूज खत्म हो गए गिवन सीक्वेंस में. राइट, यहाँ पे आपके वैल्यूज अभी खत्म हो गए, सब वैल्यूज वी हैव टेकन नाउ. राइट, तो अभी यहाँ पे वैल्यूज खत्म हो गए और यहाँ पे अगर 1 है समझो, तो मुझे सीक्वेंस क्या लिखना पड़ेगा? 0 1 1 0 0 0 0. 0. मतलब ये लास्ट के वैल्यू हमें 0 आने तक हमें ब्लॉक फॉर्म करना है. आया समझ में?
तो हमारे यहाँ पे सैंपल्स खत्म हो गए, बल्कि हम यहीं पे हम इसको नहीं छोड़ सकते। सो ये जो वैल्यू है अपने लास्ट के, ये 0 आने तक हमें ब्लॉक फॉर्म करना है। अंडरस्टूड? तो ये 0 ही है अपना अभी, राइट? नाउ दिस इज आपण बोला की ब्लॉक जर 4 किंवा 6 चा करायचं म्हणलं तर काय करायला? कोणता? ब्लॉक आपण फॉर्म करताना 5 नसताना 4 किंवा 6. करू शकता ना. आता पहिला आपलं काय, जर तुम्हाला चला आता 6चा करायचा आहे समजा, 6चा करायचं म्हणजे m-1 झिरोज तर फिक्स राहणार आपले, राइट? m-1 जीरोज, 2 जीरो हम यहाँ पे ऐड करना है. फर्दर यू टेक 4 सॅम्पल्स, 4 व्हॅल्यूज घ्यायचा आपल्याला, टोटल लेंथ आपलं 6 झालं. कळालं का? आता मी इथं 5चा लेंथ बनवायचा आहे म्हणून 3 सॅम्पल घेतले. तर तुम्हाला 6चं करायचं असलं तर 4 सॅम्पल घ्यायचं, 3 -1 0 1 घेतला असता. तसं ब्लॉक फॉर्म करू शकता आम्ही, काहीच अडचण नाही. क्लियर? येस सर. स्टिल एनी डाऊट हिअर? आता काय डाऊट आहे का कोणाला अजून? चला प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. येस सर. Okay, now this is the way how we are forming the blocks. Okay, आता मी पुढचा पार्ट घेतो. Like let us take the next part. So what next I need to do? I need to calculate y1 of n. अभी y1 of n हमें कैसा कैलकुलेट करना है? Using circular convolution method, right? So I wanted to calculate y1 of n. y1 of n is equals to, क्या लिखना है हमें? x1 of n 5-point circular convolution with h of n, right? x1 of n 5 point क्यों? यहाँ पे हमारा इनपुट लेंथ सीक्वेंस 5 है. ओके, तो दिस यू कैन सॉल्व विद द मैट्रिक्स मेथड. तो मैट्रिक्स मेथड के लिए अभी एच ऑफ एन हमें पता है, तो कैसा लिखते हैं उसका मैट्रिक्स फॉर्म? व्हाट इज एच ऑफ एन? दिया हुआ है 1 1 1. अभी इसका लेंथ मुझे कितना करना है? 5. तो ये 5 हो गया. ठीक है, ये मैट्रिक्स कंप्लीट करो और कैलकुलेट द वैल्यू. हियर 0 1 1 1 0, the next 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1, then again 1 1 0 0 1, which is multiplied with which sequence? x1 of n. x1 of n क्या है यहाँ पे? 0 0 3 -1 0 3 -1 0. चलो कैलकुलेट करो आंसर इसका. जस्ट कैलकुलेट द आंसर एंड टेल मी. Yes, what is the answer? Just calculate y1 of n. -1 0 3 2 2. Okay, let me check that. -1 0 3 -1 0 3 2 2. 2 2, -1 0 3 2 2. Okay, how many of you have got this answer? Yes, sir. Hope everyone is noting this. अब ये इनपुट पार्ट्स मैंने हटा दो यहाँ से, और else I will write it here somewhere. तो हमें ये यहाँ से निकाल देता हूँ मैं ये. Okay. Now first, let me write here the value.
तो ये वैल्यू लिखता हूं मैं y1 ऑफ 1, राइट, y1 ऑफ n इज इक्वल्स टू कितना है वैल्यू अपना -1 0 3 2 2. Okay, then next similarly calculate y2 of n. y2 of n कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी? How do you calculate y2 of n? क्या चेंज करना है? x2 of n circular convolution 5 into h of n. ओके, दिस 5 क्यों लिया मैंने, आपको सब लोगों को समझ में आया? Why I have taken this 5 is लेंथ ऑफ द ब्लॉक हमने 5 चूज किया है, वहां पे 6 है तो 6 लेने का, 4 है तो 4, 8 है तो 8, वट एवर इट इज. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ठीक है, ये रखता हूँ मैं यहाँ पे जैसा है वैसा. सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y2 ऑफ n. तो आप मैट्रिक्स है ऐसा लिख सकते हैं, जस्ट गो ऑन चेंजिंग द इनपुट वैल्यू. दिस इज x2 ऑफ n. So this I will just rub here and I will put the value of x2 of n so that you can get the answer. Just calculate and tell me the answer. तो यहाँ पे x2 of n क्या है अपना -1 0 1 3 2. Just calculate and tell me the answer. फोर वन जीरो फोर सिक्स 41046. 41046. कितने लोगों का आंसर है? How many of you got this answer? y2 of n is equals to, this is 41046. 41046. How many of you got this answer? Yes, sir. 41046. Okay. Hope everyone is doing. If anyone has any confusion, please ask me the questions. Let's calculate for third value. y3 of n. Just calculate for third one. Calculate for y3 of n. y3 of n के लिए x3 of n का मल्टीप्लाई करना है हमें. So just calculate the answer. यहाँ पे अभी x3 is what, like 3 2 0. So I suggest you that write a matrix for h of n, क्योंकि वो फिक्स रख सकते हैं हम. Our inputs are going to get changed, so you just keep the matrix fixed for this h of n, so that you can calculate the values. y3 of n is equals to 67533. it is 6 6 7 7 5 3 3 3 बराबर 67533. Okay, calculate further values also. 67533. How many of you have got this answer? Yes, Yes, sir. sir. Okay, calculate last value y4 of n. 13431.
Just a minute, and let me write it here. Others will also calculate that. Last value y4 of n will be equals to y4 of n will be equals to, this is x4. वैल्यू कितना आ रहा है वहां पे उसका? So its multiplier is 1, 2, 1, 0, 0. तो ये वैल्यू कितना आया? 13431. 13431. Okay. The answer is 13431. This is 13431. You please all note down at the end this output sequence. At the end of the result, will it write down y1 of n, y2 of n, y3 of n, and y4 of n. This is very important thing again. Finally, we will write the output as y of n. Finally, we will write the output as y of n. ये आपने blocks जैसे हमने output blocks form किए हैं ना अभी. So we are just formed output block here y1 of n, y2 of n, y3 of n, and y4 of n. तो क्या किया हम वहां पे? कोई बताएंगे मुझे what we are done with the output part? If you look at into the block diagram here, in the output part, discard m-1 samples, right? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, we are just discarding the m-1 samples. So what does it mean? m-1 samples में कितने value discard करना है हमें यहाँ पे? 2 values, right? So here as two zeros we have added, it's not 2 zeros. As we have added m-1 zeros, so we have to discard the m-1 values. Okay. Okay. So that is these m-1 values I am just discarding from each block. Each block से मैं m-1 value discard कर रहा हूँ, and then I am writing my output as y of n is equals to. बचा हुआ सैंपल क्या है अभी वहां पे? 3, 2, 2. What is there in the next sequence? 0, 4, 6, 5, 3, 3. 5, 3, 3. Then 4, 3, 1. 4, 3, 1. You just check that whether this answer is same as the answer which we have calculated with tabular method. Same, sir. Same है ना? Yes, sir, same है. Same है. So this is the way how we can calculate the circular convolution with the help of overlap save method. Clear? Hope you understood the diagram now. Yes, sir. Yes. Any confusion here? No, sir. Okay. This is all about overlap save method. Then let us go to the overlap add method as a second part. तो हमें यहाँ पे what will be our conclusion? कोई बताएंगे मुझे अभी? So how do we remember the steps? चलो अभी आपने भाषा में बता दो मुझे कोई. How do we conclude for this first point? क्या करना है हमें? Yes, anybody? Assuming the value of L. Assuming the value of L, if not given. Okay. हाँ. Then Assuming the value of L, if not asked in the question. Okay. Then Block form. x1 of to block form. formation. Block formation. While block forming, what are the things to be remembered? Addition of number of zeros. m-1 zeros. m-1 zeros should be added in the first block. Then what about in the second block? Last 2 point
taking first in the next one. m minus 1 values of the first sequence should be taken as the m minus 1 value of the second sequence first values, right? That is Yes, what sir. the block formation. So these things you need to remember very carefully. Then finally, Circular convolution of each block. using circular convolution, circular convolution, calculating values of output like y1 of n, y2 of n, like that. ठीक है? And for fourth point, क्या कर रहे हैं हम? Discard m minus 1 from each output block. Okay, discard m minus 1 values from each output block and write the final output as y of n this way. Right? Hope everyone has understood this much. यहाँ पे किसी कोई Yes, sir. डाउट है अभी? Any question from this? No, sir. Can I get response from the others also? Should I proceed to the next part? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. Let us proceed with the next method, overlap add method. तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, slight variation is there, slight change we are having. तो ये सब अभी equations I am just not giving you to like. So this is how the overlap add method. So what the difference here is in overlap add method. So this is our given sequence. तो क्या डायग्राम में चेंज पता चल रहा है आपको, कोई बताएंगे मुझे? Adding m minus 1 zeros at end of sequence. Yes. तो ये अपना लॉन्ग सीक्वेंस है, राइट? एडिंग m minus 1 zeros in each block. This is very important thing again, right? Adding m minus 1 zeros in each block at the end. ठीक है? उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? What we are writing with here again we need to perform with the circular convolution part, right? यहाँ पे हमें और आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए y of n कैलकुलेट करने के लिए I need to perform a circular convolution x of n circularly convoluted with h of n, तब जाके हमें ये आउटपुट आएगा, right? So how we are writing the output here again? So this is my y1 of n and this is my y2 of n and this is my, let us assume y3 of n. तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे आउटपुट में? what we are doing? Discard m minus 1 element from the end of sequence. हाँ, डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. So as the name it is there, overlap add method, यहाँ पे we are just adding m minus 1 values. समझ में आ रहा है? जितने जीरोस हम ऐड किए थे ना यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 2 सैंपल है, so 2 samples of this will be added with the first 2 samples of this. So this is very important part here, right? We are just adding the values, m minus 1 values of the first sequence last samples, m minus 1 last samples of the first sequence will be added with the m minus 1 first samples of the second sequence. और remaining values वैसा लिख रहे. Likewise, we are just forming the block. So this is what we are calling it as overlap add method. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपके एक सीक्वेंस है, चलो 1 1 1 1 1 सीक्वेंस है ऐसा, ठीक है? ये आपका पहला आउटपुट है और दूसरा आउटपुट ऐसा है, समझो अभी यहाँ पे 1 1 0 1 1 है. तो कैसा फॉर्म करेंगे? अभी मैं आउटपुट कैसा लिखूंगा? अभी y of n equals to, let us assume that this first 3 samples I will take it as it is 1 1 1. तो ये दो हमने ऐड किए यहाँ पे, तो ये दो, तो क्या होगा? अभी कितना आएगा आंसर? 1 + 1 2 और 1 + 1 2, और ये सैंपल जैसा है वैसा लिख रहा हूं मैं, और ये 1 1 ऐसा लिखते जा रहा हूं. दिस इज माय आउटपुट. दिस इज द एडेड पार्ट. आए समझ में? Yes, sir. Right. So you please take the diagram, then we will proceed with the example so that you can understand more clearly.
तो डायग्राम ले लो.